अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इरशाद फ्रॉम टोरंटो कनाडा एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नए सबक के साथ। इंग्लिश अब उर्दू में किस्त नंबर 34 इजी इंग्लिश इन उर्दू। आज हम देखेंगे कि वर्ड एबिलिटी ABILITY जिसके मतलब है सलाहियत, इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। हाउ टू यूज़ वर्ड एबिलिटी इन अ सेंटेंस। अच्छा तो जनाब, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन भी दबा दें और लाइक कर लें ताकि हर नई वीडियो के अलर्ट आपको फ़ौरन मिल सके। इसके अलावा आप ये समझते हैं कि अगर ये आपको फ़ायदा दे रही है ये क्लास, आप इससे सीख रहे हैं, तो लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इंग्लिश बोलना सीख सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ी सीखने के 3 उसूल, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रामर सीखने में हम अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे, इन जुमलों को रोज़मर्रा के मामलात में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला जुमला है, मुझे इसकी सलाहियतों पर एतमाद है। इसकी यानी किसी भी शख्स के बारे में बात की जा रही है। मुझे इसकी सलाहियतों पर एतमाद है। I have confidence in his abilities। ये एबिलिटी का जमा हो गया, प्लूरल हो गया एबिलिटीज। TY की जगह IES लग गया, वो एबिलिटीज हो गया। I have confidence in his abilities। मुझे इसकी सलाहियतों पर एतमाद है। हिंदी सीखने वाले या बोलने वाले जो ऑडियंस है उनके लिए मैंने हिंदी यहाँ डाल दी है। मुझे पढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन आई होप कि ये आपको के लिए हेल्प करेंगे। अगर ये कर रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चल सके। मुझे इसकी सलाहियतों पर एतमाद है। आई हैव कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज। जनाब, अब ये एक दूसरा जुमला है, वो एक कारोबार को मैनेज करने की सलाहियत रखती है। वो एक कारोबार को मैनेज करने की सलाहियत रखती है। शी हैज़ द एबिलिटी टू मैनेज अ बिजनेस। वो एक कारोबार को मैनेज करने की सलाहियत रखती है। शी हैज़ द एबिलिटी टू मैनेज अ बिजनेस। शी हैज़ द ability to manage a business। She has the ability to manage a business। वो एक कारोबार को मैनेज करने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ आपने देखा कि हम वर्ड एबिलिटी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, सलाहियत को। उनके पास सलाहियत है। She has the ability to manage a business। वो एक कारोबार को मैनेज करने की सलाहियत रखती है। ये काम मेरी काबिलियत से दूर है, यानी मैं नहीं कर सकता, मेरी एबिलिटी नहीं है इसकी। ये काम मेरी काबिलियत से दूर है, मतलब ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मेरी सलाहियत नहीं है इतनी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दिस जॉब इज बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब आगे, मेरी पहुंच से आगे। माई एबिलिटी। दिस जॉब इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी। ये मेरी सलाहियत नहीं है इसकी, मेरी काबिलियत से बहुत दूर है। दिस जॉब इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी। दिस जॉब इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटीज। ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो काबिलियत है, इससे बहुत दूर है। This job is beyond my ability। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैंने उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ नहीं डाली है, लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रैक्टिस ना ख्वातीन कह रही हैं कि पहला है जो ये प्रैक्टिस करने के लिए, I trust his executive ability। मैं
ان کی جو صلاحیت ہے، جو ایکسلنٹ صلاحیت ہے، ان پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. I trust his executive ability. میں اس کی ایگزیکیوٹیو ایبلٹی پر ٹرسٹ کرتی ہوں. پھر یہ کہتی ہیں I don't have much faith. I don't have much faith in his ability. لیکن اب یہ کہہ رہی ہیں مجھے اس کی صلاحیتوں پر زیادہ اعتماد نہیں ہے. I don't have much faith in his ability. مجھے اس کی صلاحیتوں پر زیادہ اعتماد نہیں ہے. پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ she don't have the ability. She don't have the ability. اس کی یا اس خاتون کی یہ صلاحیت نہیں ہے، یا ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. کس چیز کی صلاحیت نہیں ہے؟ آگے کچھ نہیں لکھا ہوا. She don't have the ability. ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. Anything, کوئی بھی جملہ آپ آگے لگا سکتے ہیں. She don't have ability to drive the car. وہ گاڑی چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. پھر یہ کہتی ہیں Do you have the ability to convince her? Do you have the ability to convince her? ان کو کنونس کرنے کی آپ میں ایبلٹی ہے. Do you have the ability to convince her? کیا آپ میں ان کو کنونس کرنے کی صلاحیت ہے؟ پھر یہ کہتی ہیں I don't think you have ability to fix the tap. Tap یہ ٹیپ نہیں ہے، یہ ٹیپ ہے. ٹیپ کا مطلب نل کا. I don't think میں نہیں سمجھتی you have ability to fix the tap کہ آپ یہ نل کا فکس کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. I don't think you have ability to fix the tap. میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے کہ آپ اس نل کو فکس کر سکیں، ٹھیک کر سکیں. پھر یہ کہتی ہیں lovely، زبردست. I did not know that lovely, I did not know that you have the ability to fix the car. زبردست، خوبصورت. I did not know مجھے نہیں معلوم تھا. I don't know نہیں معلوم ہے. I did not know مجھے معلوم نہیں تھا that you have ability to fix the car کہ تم گاڑی کو صحیح کر سکتے ہو. Lovely، زبردست. I didn't know that you have ability to fix the car کہ تم میں صلاحیت ہے اور تم جانتے ہو کہ گاڑی کو کیسے صحیح کرنا ہے. I trust his executive ability. I don't have much faith in his ability. She don't have the ability. Do you have the ability to convince her? I don't think you have ability to fix the tap. Lovely. I didn't know that you have ability to fix the car. اوکے جناب، اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ یہ خاتون یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز میک فیو سینٹینسز اینڈ رائٹ ان کامنٹ سیکشن. آپ میری نہیں سنتے، یہ باجی کی سن لیجئے. باجی کہہ رہی ہیں پلیز میک فیو سینٹینسز اینڈ رائٹ ان کامنٹ سیکشن. جب آپ نے ابھی پڑھا ہے تو اس کے ورڈ کو لے کر کے کچھ نئے سینٹینسز بنائیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے، اور نیچے کامنٹ میں لکھیں تاکہ باجی چیک کر سکیں. تو جناب آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. کامنٹ میں مجھے بتائیں، اور اگر اس کو کس طرح سے امپروو کیا جاتا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مجھے بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو سجیشنز ہیں مجھے اس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.